A cheerful good morning and a very warm welcome. Once again, welcome back to the science class. If you all remember, last week the cases of COVID-19 were continuously rising, and I hope the conditions are now also the same only. Okay, and due to these conditions only, the restrictions are day by day increasing, and all these effects are basically due to the ineffectiveness of the people. Basically, I cannot say the ineffectiveness, but it is basically the lacking awareness, you can say. But our government is still providing a lot of facility for the awareness as well, but it is mainly the concern for them, but they are not taking it seriously. This is the main thing what I can think here is that. So I request each of you, because you all are responsible citizens of this country, and at the same time you all are educated enough, you all are mature enough to understand the importance of the mask, sanitization, and each and everything for remaining safe here. Okay, if you remember, in the last class, that was on Wednesday, we have started out this chapter. We completed the previous chapter, air and water, and then we started this one, that is your rocks and minerals. Okay, in this chapter we have studied the three different types of the rocks, that is your igneous, sedimentary, and metamorphic. We also discussed about the igneous, that is made below the surface of the earth due to the heat, and the different types of the igneous rocks, that was your granite, basalt, and your pumice. Thereafter we also discussed about the sedimentary rocks, that is the rocks which are basically formed by the formation of sediments, and all these rocks, they are formed except for your granite. Most of them, or let us see, but I don't think that except for the granite, next all other rocks, they are formed above the surface of the earth only. Okay, so these sedimentary rocks, if you remember, they were formed as a result of the formation of sediments of different types of rocks, and these rocks, after passing on a very long time, that is millions of years or billions of years, they got converted into hard rocks, and thereby known as sedimentary rocks. Now we also discussed about the fossils and the importance of these fossils in studying about the plants and animals which were present in our ancient times or in our past. Today we have to start with the examples or the types of the sedimentary rocks. So starting with this, what you are able to see here is, that is, we have the very first type of the sedimentary rock, that is known as your shale. The layers of clay and tiny mud particles form a soft rock called shale. When we immerse a piece of shale in water, it smells like wet mud. We mostly use shale to make bricks and tiles. Okay, so this layers of clay and tiny mud particles form a soft rock. So this is now what we are going to start with some of the soft rocks which are present. That is, slowly and slowly now you will find, that is, the hard pieces of rocks, they will become soft, and in place of rock you will be getting familiar with the terms clay, mud particles, soil, and finally they will get converted into soil. Okay, so when we are talking about this particular type of sedimentary rocks, so layers of clay means it is a kind of soil only, mitti. Okay, layers of clay and tiny mud particles, they form a soft rock. That is, this shale is a combination of clay and mud particles. When we immerse it, that is, when you
put this shale rock in water, it smells like wet mud, and it is mostly used to make bricks. Mostly used to make bricks and tiles. Starting with the next one, we have here sandstone. That is, the layers of sand grains, they form sandstone. It mostly contains the mineral quartz. Okay, if you remember, this quartz is also used in the watches as well. Okay, the different watches the wrist watches as well as the other watches which are present, they are also use this mineral, that is your quartz as well. When we are going ahead with this, so what is this here? The layers of sand grains. Okay, sand grains basically means balu. This is going to form sandstone. The mineral which is present here is your quartz. This sandstone may be red, pink, brown or yellow in color. We commonly use it as a building stone. The walls of the Red Fort in Delhi are built with the red sandstone. Okay, so if you discuss, or what we have seen here is that this sandstone, it is made from the sand grains, okay, containing the mineral quartz. The color can be a red, pink, brown or yellow. Basically use it as a building stone, and the Red Fort is one of the superb example which is built with the red sandstone. Okay, so first we have discussed about the shale, which is a soft one, and then we discussed about the sandstone, which is much more harder. As you can see, it is used in buildings as well. The next we have here is, that is your conglomerate, okay, which is another type of sedimentary rocks. If you can see the appearance of this conglomerates, so this is the layer of pebbles and gravel, okay, form conglomerate, that is pebbles and gravel, that is your gitti and balu. Okay, these both the things, they combine together to form this type of rocks which is known as your conglomerate. Okay, it is mostly gray or orange in color. We use conglomerate for decorative purposes. Okay, since they are gray or oranges in color and they are formed from the sand as well as the pebbles, that is the gravel is basically the fine particles of sand only as per my knowledge. Okay, so this is, since it is having a particular color which is much more unique, as you can see contrasting colors are present, so this is basically used for your decorative purposes. Okay, moving ahead with this, so we have here is your limestone. When this is the most important one. Okay, many sea animals have hard shells coverings on their body. When these animals die, their shells settle on the seabed. These shells contain a mineral called calcite, that is related to your calcium only. Okay, so over the years, these shells get deposited in thick layers and form limestone. Chalk is a type of limestone, and limestone is widely used as a building stone. It is also used for making cement and glass as well. Okay, so limestone is generally chuna. Okay, ठीक है, in Hindi we call it to be chuna. And the characteristic of this limestone is कि एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक से आप कह सकते हो इसके बारे में कि when you take, if you will take this piece of limestone and put it in water, ठीक है, आप लाइमस्टोन लिए और पानी में डाले नहीं कि आपको एकदम से जैसे पानी उबलने जैसे लगता है, ठीक है, कुछ उस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा.
और पानी आपका एकदम से गर्म हो जाएगा। ओके, आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा ये एफर्वेसेंस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिएगा, ठीक है, कि केयरफुली करिएगा भी, या तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, या फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स प्लीज़ ट्राई टू डू दिस। ओके, दिस इज़ वेरी मच चीपर, okay, this is your limestone, but a little bit dangerous as well. Dangerous means only when up to it is hot. After getting cooled down, it is not dangerous at all. Okay, but still care has to be taken. So if you'll take a very small piece and put it in a glass of water, transparent glass, or if you observe it from the upper side, so you'll find that effervescence will start coming, heat will start coming out from this water. Okay, so this is one a kind of reactions which takes place. Okay, so how this limestone is formed, all of you know that we have different kinds of sea animals. बहुत ढेर सारे sea में ऐसे animals होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल्स होते हैं, जैसे आपके टॉर्टॉइस का ही ले लीजिए, उसके ऊपर भी काफ़ी हार्ड शेल्स होते हैं। ओके, सी एनीमोन का ले लीजिए। ओके, in the similar way, much more animals are there, and when they die, okay, their shells settle on the seabed. That is, seabed का मतलब होता है कि समुद्र का जो तल, या फिर ओशंस, रिवर, कुछ भी, जो भी आप बात कर रहे हो, जिस भी वाटर बॉडी की, उसका सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है सी बेड। सी की हम बात करेंगे तो सी बेड, रिवर की बात करेंगे रिवर बेड, ओशन की बात करेंगे तो ओशन बेड। ठीक है, सो ऑल दीज शेल्स, ठीक है, ये उस पर जा करके नीचे सेटल हो जाते हैं, एंड दीज शेल्स कंटेन द मिनरल विच इज़ नोन एज कैल्साइट। बहुत साल जब बीत जाता है, ठीक है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सो व्हेन मोर एंड मोर शेल्स दे गेट डिपॉजिटेड ओवर वन अनदर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू लाइमस्टोन, और दे फॉर्म लाइमस्टोन। Chalk is one of the examples of it. Okay, and the uses of limestone is preferably in buildings stone, and it is also used for making your glass as well. It is used for making cement as well as glass. Okay, moving ahead with this, okay, so this was all for your sedimentary rocks. Now we are going to start with the metamorphic rocks, which is here. Please have a reading of this metamorphic rocks, and thereafter we'll be starting with this. I'm just giving you 30 seconds for this, so please go through it and let us go ahead with this. Okay, now I hope all of you have read this part. One thing I would like to rectify here is, that is, by mistake I have told you this part, which I have told you limestone, that is chuna. Okay, it is not, this is not chuna. Okay, that is lime, that is not limestone. ठीक है, उसका खाली यहीं तक है। ठीक है, that chuna which I am talking about, that is your calcium carbonate. Okay, तो वो लाइम उसका नाम है। ठीक है, लाइमस्टोन नहीं है। सो दिस इज डिफरेंट एंड लाइम इज डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोल भी सकते हो कि लाइम इज योर चूना, वेयर एज लाइमस्टोन इज अ पीस ऑफ रॉक। लाइम में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ओके, लाइमस्टोन में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्साइट प्रेजेंट होता है। ओके, स्टार्टिंग विद दिस, लेट अस गो अहेड। मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये वर्ड आप लोग कहीं लिख लीजिए, या फिर अगर आपके एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। क्लास 8th में
मोस्ट प्रोबेबली आपको रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस या फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, सॉरी मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस का बेसिकली मीनिंग होता है चेंजेस, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम में होता है और उस चेंजेस की वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नए आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जब बॉर्न होते हैं तो बेबी होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर के एडल्ट हो जाते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर मेटामॉर्फोसिस ओनली, चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस completely. Okay, so metamorphosis means changing completely into something new or different. Okay, now sometimes heat and pressure may cause igneous and sedimentary rocks to change into different rocks. The new rocks are called metamorphic rocks. They look different from the parent rocks. Metamorphic rocks are also harder and stronger than the parent rock. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक और नई चीज आपको देखने को मिलेगा। इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि कभी कभी पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, बायो में या फिर जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसी को भी कोई डेप्थ नहीं पता है। ठीक है, ये हम खाली हमें एक सिखा दिया गया है। ठीक है, ना मैं गया था देखने के लिए, ना मुझे जिसने पढ़ाया वो गए थे देखने के लिए। ठीक है, ना आप जाओगे देखने के लिए। ठीक है, एक ऐसा चेन चला आ रहा है, जो मुझे पढ़ाया गया आज मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उस अर्थ सरफेस के नीचे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये कोई नहीं जानता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हम नहीं जानते, कैसे हो रहा है नहीं जानते, बस एक बता दिया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आपको जानना है। ठीक है, कोई देखा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इस चीज़ को, कोई नहीं जानता है कैसे है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, कहते भी हैं हम लोग अपने आप को। हमारी बॉडी के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आपको भी पता है क्या है, बताइए। बोन्स, हमारे बोन क्या है, नॉन लिविंग ही तो है। तो हमने शुरुआत से लेकर के लास्ट तक क्या खाया, लिविंग चीज़ें खाई। लिविंग लिविंग हम बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये बोन्स आए कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर, हमने तो कोई नॉन लिविंग चीज़ खाई नहीं, सब लिविंग ही खाया। ठीक है, एक कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम कैसे बना, कैसे हमारी हड्डियों की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, क्यों एक स्पेसिफिक शेप में ही हुआ, तो वी डोंट हैव एनी आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ओके, सो देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर्स विच इज अकरिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर चेन चली आ रही है एंड वी कैन नॉट गेट इन टू डेप्थ ऑफ इट, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्यों, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, द एंटायर बॉडी इज सर्कुलेटिंग विद द ब्लड। ओके, आप रोक सकते हो, आपको पता है आपका ब्लड कहाँ पर है, आप रोक लो। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। हार्ट बीट को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ, दे ऑल आर नेचुरल ओनली, governed by some or the other supernatural powers, okay, which is beyond the understanding of the humans or living beings. ठीक है, getting back to our own topic here, अब देखिए रॉक्स तो वही थे। अभी एक तरफ हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो नीचे ही धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर आकर के जो पानी में, ठीक है, सेटल होते 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 सेडिमेंट्स बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्विस्ट क्या आया, ठीक है, उसी अर्थ सरफेस के नीचे ही, उसी हीट के वजह से, उसी टेम्परेचर के वजह से, उसी प्रेशर के वजह से कुछ ऐसे रॉक्स हैं, कुछ ऐसे क्या, यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, न्यू रॉक्स में। ठीक है, मतलब वो इग्नियस रॉक्स से कन्वर्ट हो गए एक न्यू टाइप ऑफ रॉक्स विच इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स एक नए टाइप में कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो एक जगह यही सारे पावर्स, दैट इज हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज मिल करके एक जगह इग्नियस रॉक दे देते हैं, दूसरे जगह सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स दे दे रहे हैं।
ठीक है, एक जगह सेडिमेंट्री दे रहे हैं, फिर एक जगह मेटामॉर्फिक दे रहे हैं, ठीक है, एक जगह इग्नियस दे रहे हैं, फिर एक जगह उसी रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. सो ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बस हाँ एक है, ठीक है, अगर हमने बना दिया है कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, बस हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. तो आप भी फॉलो करिए, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उसी हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू टाइप्स ऑफ रॉक्स विच इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. Let us go into the detail of this metamorphic rocks. These metamorphic rocks, they are completely different from sedimentary or igneous rocks, and they look different from the parent rock. अब parent rock की जो बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो parent मतलब कौन होता है? Parents हमारे mother father, जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया, पैदा किया. In the same way, if you remember, this metamorphic rock is the acting like the child, whereas the igneous rock and the sedimentary rocks are his parents. ठीक है, इस metamorphic rocks के parents कौन हैं? Igneous rocks और sedimentary rocks. तो ये अपने parent से एकदम अलग दिखाई देता है. That is, this rocks, it is metamorphic rocks are completely different from the igneous or sedimentary rocks from which they are formed. And these metamorphic rocks, they are also harder and stronger than the parent rocks. ठीक है, ये आपके sedimentary और igneous rock से अलग तो दिखते ही हैं, साथ ही साथ उससे ज़्यादा strong भी होते हैं. Some types of metamorphic rocks are given below. चलिए अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. The very first one is your marble. Next is your slate, बहुत common word है. Next is your gneiss. Next we have your quartzite. Okay, there we have studied about one of the minerals, that is your quartz, and next we are going to study here is, that is your quartzite or quartet. Okay, next let us start with this marble first. So this marble, as all of us we know, that is limestone changes to marble. Okay, and if you remember, limestone was what? Limestone is, or it was, one of the type of the sedimentary rocks. See here. Okay, these are the different types of sedimentary rocks: shale, sandstone, conglomerate, and your limestone. So this limestone, it gets converted into marble due to the intense heat, pressure, and everything. That is the conditions which are prevalent at the bottom of the surface of the earth. Next we have here is, that is, these marbles can be cut and polished easily and made very smooth. The marbles occur in different colors such as white, black, yellow, red, and brown. We use marbles for making buildings and statues. Okay, घर में पहले सबके marbles ही लगते थे. Now after this marbles came your tiles आ गए, because marbles, they are much more heavy as well as costly as compared to your tiles, and these marbles, they require much more finishing or polishing, which is not required in the case of the marbles. Okay, so since this marble is formed from the limestones and they can be easily cut and polished and made very smooth, they are used in making buildings as well as statues. The next one we have here is, that is your slate. So the slate, shale changes to slate. Okay, now shale was what? If you remember, shale was the first type of sedimentary rocks here. Okay, which was a soft rock made of clay and tiny mud particles. Okay, so this shale gets converted into slate
whereas the limestone gets converted into marbles. Okay, this slate is shiny and smooth. We can break it into thin layers. We use slate to make roofs, blackboards and writing slates. अगर आपको याद हो या आप लोगों ने देखा भी हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गांव में पहले लोग स्लेट लेकर के ही जाते थे और जो चौक के पीसेस होते थे वो गोला होता था, लंबे नहीं होते थे, टुकड़े होते थे जैसे स्टोन के टुकड़े होते हैं उस टाइप के, और हम लोग उसी से लिखते थे उसके ऊपर. ओके, सो दिस स्लेट is nothing but your blackboard which you are able to observe it in your classrooms. So all the blackboards which you are able to see in your classrooms, they are basically made from the slate only, and this slate is formed from shale. Remember, shale से slate, and slate is a type of metamorphic rock, whereas shale is a type of sedimentary rocks. Okay, starting here is that when we are talking about the next type of the metamorphic rock, we have here, that is the third one, that is your gneiss. This granite changes to gneiss basically. Okay, it has light and dark bands. Gneiss is commonly used in flooring and paving. Paving मतलब सीढ़ियों पे. Okay, so this gneiss has light and dark bands. Light and dark bands का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइट है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क, लाइट डार्क. तो इस तरीके से क्या रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं और चलते चलते ये बैंड फॉर्मेशन पैटर्न हो जाता है एक, एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई दिस नाइस मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, and this is formed from granite. Granite क्या था? If you remember, granite was the type of the igneous rocks. Okay, so granite से क्या बन गया? Gneiss. ध्यान से देखिए, अगर आप लोग रिकॉल कर सकें या एक ट्रिक या वर्ड्स याद रखें, ग्रेनाइट से नाइस बन गया. ओके, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक, नाइस मेटामॉर्फिक रॉक. शेल से स्लेट बन गया, शेल सेडिमेंट्री रॉक, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक. लाइमस्टोन से क्या बना? द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल बन गया. ओके, in this way let us move to the last part, that is your quartzite. So this sandstone changes to quartzite. It is very hard and it is used to make statues. ठीक है, so this sandstone, if you remember sandstone we have discussed in the sedimentary rocks, that is the layers of sand grains, they form the sandstone, and sandstone gets converted into quartzite. Okay, since it is very hard, that is why it is used for making the statues. Okay, the Taj Mahal in Agra is made up of white marble. Okay, as we can see as we have read here, that is the color of the marbles can be your white, black, yellow, red or even brown as well. Okay, so this is the checkpoint which we are going to do it little bit later, or we can just try it here as well. Okay, the molten rock inside the earth. Okay, that is your, what is that molten rock when we are talking? So it is your magma or the lava. Lava, it's what comes out inside the earth is your magma. Rock that can float on water, pumice, as it is having a lot of holes present in it. See here, pumice. Okay, next we have here is, that is the mineral present in the sandstone. The mineral which is present is your quartz, I hope. Okay, sand, quartz, and that is why it is quartzite. ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि the quartz mineral is present in the sandstone and it gets converted into quartzite. बस ITE लगा देना है. Okay, the metamorphic rock formed from shale, shale से slate. Okay,
Now the next part is, that is the rocks as a form of resources, we will be doing tomorrow, that is on Tuesday. Okay, so this was all for today. Please take care of yourself. Please do not forget to take all the necessary precautions, and at the same time please take care of yourself. Thanks a lot for being with me. Have a superb day ahead. Thank you.